So he has a post-traumatic deformity, and it's pretty challenging because you can see the first issue is his forehead has got depressed here. So he's had a depressed frontal bone fracture. Second thing is, if you look at his eyes, this eye is a little bit more proptotic, or meaning it's come out, थोड़ा बाहर निकल आया है, and this is bone here, यहाँ पे हड्डी है और यहाँ पे हड्डी नहीं है. तो this bone is depressed, this bone is come outside, and इनका nose देखिए ये पूरा right side पे shift हुआ है. ये गड्ढा या this angle is more, this angle is less, and the dorsal aesthetic line, there's a slight curve towards the tip. The tip is on the midline, but the radix and the dorsum has moved towards the right. So we're going to be doing an open structure rhinoplasty. Doesn't have support on the tips. It's going to be a septal reconstruction, septal work, osteotomy to move the bone towards the midline, correction of the dorsal aesthetic lines, also correction of the glabella on this part of the forehead and the supraorbital ridge. So we're going to be doing a bicoronal approach. So it's going to be coming from there. So I can approach the root of the nose, the forehead and the supraorbital rim from that side, and the nose from the nasal aspect. ठीक है, तो आपको आज करना है कि कल करना है? Because इनका फिर रेडी करो पहले, मैं लिख देता हूँ चार्ट में, लेके आओ. ऐड 3 साल पहले से मैंने देखा. जैसे जब मेरा सर्जरी हुआ था तो मेरे को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया, राइनोप्लास्टी को जाना स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे आपका मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे. क्योंकि देखो आपका आंख भी स्ट्रेट नहीं है अभी, ये आंख गैप है यहाँ पे, वो सब सही हो जाएगा सर्जरी के बाद. आपको 10 दिन रहना पड़ेगा हमारे साथ कम से कम. हॉस्पिटल में 5-6 days. So 1 patient 2 attendant allowed. 1 patient 1 attendant allowed. और जस्ट कलिंग मिल गई. नहीं, मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा आज जैसे इतने लोगों के लिए. वो पास में आपको ये लोग आपको होटल में बताएंगे. हाँ नहीं, ये अकेला रह सकते हैं, आप लोग दोनों बाहर रहो. इनको क्या हम लोग देखेंगे ना, क्या होने वाला है इनको. आप आ जाओ सवेरे 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे, 4, 5, 6, 7 घंटे इनके साथ रहो, फिर उनको छोड़ दीजिए. बेटर है, अकेला रहेंगे तो मतलब नर्सेस हैं, देख लेंगे, कुछ नहीं होता. नहीं है ज़रूरत, क्या ज़रूरत है. और 4-5 हाँ हम लोग कुछ नहीं होता, बेटर है वो आपके लिए. इनको भी रेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा, आपने तो बात करते रहोगे. और इनका देखो डाइट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. मतलब क्या है, जो भी हम सर्जरी कर रहे हैं, आंख के ऊपर कर रहे हैं, फोरहेड में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और नाक में कर रहे हैं और रिब निकालेंगे, बट मुंह में कुछ नहीं होने वाला इनको. तो मतलब क्या है, नॉर्मल खाना खा सकते हैं. आपको बिरयानी भी चाहिए, ये खा सकते हैं. तो ये अच्छी बात है क्योंकि डाइट नहीं होगा आपको कुछ नहीं. लिक्विड पहले 6-7 घंटे के लिए देते हैं हम, वो एनेस्थीसिया की वजह से. उसके बाद नॉर्मल डाइट, मतलब जो आज ये कल तक खा रहे थे, इनको जो भी मन लगे खा सकते हैं. तो मतलब वो बेटर है क्योंकि रिकवरी के लिए आपके लिए फास्टर है. ठीक है ना, चलो. So here we have this young man who has come to us for a post-traumatic deformity correction. You can see from the front profile, this region is called as NOA, is depressed, and also we are going to do work on his orbit, trying to get a similar result on the other side. So for this we are going to approach through an approach called as bicoronal. We are going to reflect the flap and then go doing some augmentation. Also you can see he has a deviated nose, very broad dorsum. So we are going to correct that, augment the radix, this part of the bone, this part of the nose. We are going to do a rib harvest, taking the cartilage from his 7th rib and then augmenting in his nose, giving him a nice dorsum, also to elevate the tip. So all of this procedure will require a general anesthesia. We will be shifting the patient to the theatre now. Thank you. According to you, जैसा आप बोलिए उसके बाद. So
This we can remove tomorrow. बहुत बढ़िया healing हुआ है वहाँ पे सब. This is also looking very nice. Only the nose. Nose 2 दिन wait कर लेते हैं, जल्दी मत करो, कल निकालेंगे नहीं तो. Let's not be in a hurry. कल आ जाइए. ठीक है? चलो bye. ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಸಲೈನ್ So the 12th POD, so for this patient it is case of post-traumatic nasal deformity. Take. So as I said, we had a fracture of nasal bone along with the frontal bone. We used coronal approach to correct the depressed frontal bone correction with a peak implant, as well as we augmented the dorsum with the same coronal approach here. It is a closed rhinoplasty. Mainly we worked on dorsum. So as you see is pre-op sustainable. Side by side. Okay. So look at the dorsum. We've augmented the dorsum with the costal cartilage graft. And this is incision, the coronal approach.